Assalamu alaikum everyone. So today the topic of our discussion is skimming basically, but to understand what is skimming, we will have a brief idea of what scanning is also. Okay, so skimming, firstly, skimming and scanning both are reading techniques that use rapid eye movement and keywords to move quickly through text for slightly different purposes. Okay, so both of the both skimming and scanning, they are the reading techniques that use for different purposes of reading a particular text. ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप होती है ना कि आप व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड रीडिंग दिस टेक्स्ट, आप जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसका क्या पर्पस है। तो इसी तरीके से जो उनकी जो उनका टेक्निक है वो भी वेरी करती है। सो व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। सो इफ we want to get the general overview of the material कि इसमें क्या है, टॉपिक किस बारे में डिस्कशन है, इसके अंदर किस बारे में बात लिखी हुई है और क्या डिटेल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से उसको गो थ्रू करना इज स्किमिंग, to get the general overview, to get the general idea of what the text is about. So scanning is reading rapidly in order to find specific facts. लेकिन अगर आप रीडिंग कर रहे हैं जिसमें आपने कोई स्पेसिफिक फैक्ट्स को ढूंढना है, कुछ देखना है, तो वो फिर स्किमिंग नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पे आपने अगर जो है वो कोई उसको फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो मटेरियल दिया और आपसे कहा कि यू आर गोइंग टू हैव अ क्विज फ्रॉम दिस सिलेबस, तो आप उसको स्किम नहीं कर सकते। आप उसको क्या करेंगे? आप उसको स्कैन करेंगे, मतलब इन डेप्थ उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी स्कैनिंग। तो स्किमिंग ये होगी कि जैसे आपको एक नॉवल दे दिया जाए और पढ़ने के लिए, और टीचर आपसे कहें कि आप इसको गो थ्रू करके आए, देख के आए कि इसमें क्या है, तो आप उसको जरा जरा सा स्टार्टिंग से, कभी दरमियान में से और फिर एंड से आप उसको थोड़ा थोड़ा सा रीड आउट करें, तो दैट इज स्किमिंग एंड you are going to get the general idea of what the text is about. While skimming tells you what general information is within a section, scanning helps you locate a particular fact. Yes, स्किमिंग होती है बेटा कि आपने एक जनरल इंफॉर्मेशन लेनी है कि टेक्स्ट किस बारे में है, या जो आपका नॉवल दिया हुआ है तो उसका थीम क्या है, whatever, किस बारे में लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा बात किस बारे में हो रही है। जैसे अगर आप प्राइड एंड प्रेजुडिस ले लें, जेन ऑस्टन का नॉवल, तो आपको उसको दे दिया जाए तो आप उसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, तो आप अगेन एंड अगेन देखेंगे कि लव एंड मैरिजेस का थीम उस पर चल रहा है। ठीक है, मैरिजेस की बात हो रही है अगेन एंड अगेन। सो दिस इज द स्कीमिंग, because this is not possible that you are going to read all of the novel in a night. So this is skimming. Okay, and when you are scanning some text, it means that you are locating a particular fact. For example, आपको उसमें से कोई particular dates चाहिए कि जो है वो फलां तारीख को ये हुआ था, आपने उसको वो ढूंढना है। तो जहाँ जहाँ पे डेट आएगी आप उसको वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और उसको देखेंगे, लाइन को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई पिक्चर फाइंड आउट करने के लिए दे दी जाए तो पूरी की पूरी बुक में यू आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द पिक्चर्स। So this is scanning. Skimming is like snorkeling and scanning is more like pearl diving. Yes. Skimming की जो एग्जांपल अगर लेनी हो तो वो स्नॉर्कलिंग है, यानी कि जनरली आप जो स्विमिंग करते हैं, जबकि जो स्कैनिंग है वो इट्स लाइक पर्ल डाइविंग, कि एक पर्ल है, एक जो है वो कोई रिवर है या कोई भी वाटर है, उसके अंदर एक पर्ल है और आपको कह दिया जाए कि आपने उस पर्ल को फाइंड आउट करना है, उस मोती को ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे? यू विल गो सो डीप इनटू दैट एंड यू विल सर्च समथिंग। ठीक है, so that is scanning, that you are trying to find out some specific facts about the text. So this is scanning. Okay, so use skimming in preventing reading before you read.
ठीक है, reviewing, reading after you read, determining the main idea from a long section you don't wish to read, and when trying to find source material for a research paper. Yes, when you are trying to find out some material for your research purpose, आप अपना थीसिस कर रहे हैं, उसके लिए आपको रेलिवेंट मटेरियल चाहिए, या अगर आपको ये असाइनमेंट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको रेलिवेंट मटेरियल चाहिए, तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे डिफरेंट साइट्स पे जाते हैं, उसको गो थ्रू करना शुरू कर देते हैं। आप उसको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, दरमियान से पढ़ा, थोड़ा एंड से पढ़ा, ठीक है, और आप उसको देखते हैं, जनरल एक ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, अगर कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो जो वो कोई वोकेबलरी की मिस्टेक्स या कुछ भी, और मटेरियल टू द पॉइंट है, तो फिर आपको जब एक मटेरियल लगता है कि ये टू द पॉइंट है और उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, तो आप फिर उसको इन डिटेल पढ़ते हैं और फिर आप उसमें से अपनी असाइनमेंट बनाने को डिसाइड करते हैं। सो दिस इज स्कीमिंग। Now, use scanning in research to find particular facts, to study fact-heavy topics, and to answer questions requiring factual support. Yes, आप स्कैनिंग यूज करते हैं पर्टिकुलर फैक्ट्स कि कोई रिसर्च थी तो उसके क्या रिजल्ट्स आए थे, ठीक है, तो आपको वो रिजल्ट वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आप रिजल्ट वाले को ढूंढेंगे और उसको पढ़ेंगे। सो दैट इज स्कैनिंग। Okay, but now we will just focus on skimming. Okay, so what is skimming? So skimming, as we know that it is to find the general information about any text. So skimming, why skimming is needed? Why it is done? What is the purpose of skimming actually? So skimming can save you hours of laborious reading. Yes, it saves you from reading for a longer period of time. However, it is not always the most appropriate way to read. This is not the more conscious or appropriate way to read, because when you are skimming a particular text, you are ignoring the in-depth information that is present or that is being conveyed through the text. Okay, so it is very useful as a preview if you are previewing something to a more detailed reading, or when reviewing a selection heavy in content, the content that is very much heavy, and you are just going to read that particular text in order to decide whether you should read this material or not. You are just looking, you are just going through um, the material, and you are just going to get the idea that whether this particular text is worth reading or not. Okay, but if it is given to you for the purpose of your grading, for the purpose of testing, for the purpose of evaluating and assessing, then you are not going to apply the skimming to your you know what, the whatever the text is provided to you. So you cannot provide this particular technique to your particular content or material. So, but when you skim, you may miss important points or overlook the finer shading of meaning, for which rapid reading or perhaps even steady reading may be necessary. Like you are just going to overlook the finer shadings of meaning, that what are the meanings that are being conveyed by this particular text. So what you do, that you just rapidly read the material from the beginning, from the middle, and then from the end, or the start of the passage, the end of the passage, if the material is shorter. So this is reading to know or to decide that whether you are going to read this material thoroughly or not. ठीक है, ये इस काबिल है या नहीं कि आपको इसमें से मटेरियल लेना है या नहीं लेना, पढ़ना है या नहीं पढ़ना, और किस तरह से आपको इसको मैनेज करना है। तो सिर्फ देखने के लिए कि ये टेक्स्ट अच्छा लिखा हुआ है, ये मेरे किसी काम आएगा, या जिस तरह हम जब रिसर्च करते हैं, हम जब थीसिस कर रहे होते हैं, तो what we do, that we just focus on the material, we just give a read to the literary, or for example, whatever the text is provided to us, we just give a read to the text to know that is it going to help me out? Is it worth reading for my research topic or not?
So use skimming to overview your textbook chapters or to review for a test. Use skimming to decide if you need to read something at all. Of course, you are going to decide कि आपको पढ़ना भी है सारा का सारा या नहीं. For example, during the research for a paper, skimming can tell you enough about the general idea and tone of the material. Skimming से आपको पता चल जाता है कि ये मटेरियल जिसमें लिखा हुआ है ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं. अगर होता है तो फिर आप उसको इसके ऊपर स्कैनिंग लगाते हैं, उसको मजीद इन डेप्थ पढ़ते हैं. लेकिन जब अगर आपको लग रहा हो कि नहीं ये इतना जो है वो नहीं है कि इसको इन डिटेल पढ़ा जाए, तो आप उसको क्या करते हैं, उस रिसर्च पेपर को छोड़ देते हैं एंड यू जस्ट ट्राई टू फाइंड सम अदर वन. So this is basically the skimming. So skimming can tell you enough about the general idea and tone of the material, क्या है किस बारे में है, as well as its gross similarity or difference from other sources, दूसरों से कैसे डिफरेंट है, to know if you need to read it at all, कि क्या इसको बिल्कुल आपको इसको रीड आउट करना चाहिए या नहीं. तो उसके लिए आप स्किमिंग लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो एक नॉवल हमें स्टडी करने के लिए दे दिया गया, ठीक है, मुझे उसके ऊपर कुछ हेल्पिंग बुक्स चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं मार्केट में गई, अब there are a lot more books available, a lot more helping works are available, ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि मुझे कौन सी लेनी है. तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसके ऊपर स्किमिंग लगाऊंगी वन बाय वन हर बुक के ऊपर, और मैं इसमें देखूंगी कि which book is or helping book is written more precisely and in an easy manner. So I'll focus on that. Okay, so by applying skimming, I'm going to have a brief idea about the text. Okay, so to skim, prepare yourself to move rapidly through the pages. Rapidly आप उसकी reading करेंगे. You will not read every word. आप हर लफ्ज़ नहीं पढ़ेंगे. You will pay special attention to typographical cues, headings, ठीक है. Headings को देखेंगे आप बहुत ज़्यादा. Bold face या italics type हुए में कोई थोड़ा सा bold हुआ है, किसी को italicize हुआ है, आप उसको देखेंगे. इंडेंटिंग बुलेटेड है, नंबर्ड लिस्ट है, नंबर्स दिए हुए हैं, कोई फिगर्स बनाए हुए हैं, कोई टेबल्स हैं, तो आप बस उनको देखेंगे, ठीक है. You will be alert for keywords and phrases, the names of people and places, dates, nouns and unfamiliar words. तो a lot more चीजें हैं, तो आपको जो चीजें चाहिए आप उसके ऊपर फोकस करेंगे और उसको रीड आउट करेंगे. अच्छा जी, now the point in general, follow these steps. To apply skimming, आपने ये steps को follow करना है. अच्छा जी, तो the way I told you in the previous class, again I'm repeating that you are going to apply these strategies into your daily routine, and you are going to apply this strategy to the material. जैसे मैं आपको दे रही हूँ, जेन ऑस्टन का नॉवल है Sense and Sensibility, and you are going to apply skimming on it. You can download the PDF from internet and you can apply skimming on that particular text, because it is a novel, it is a longer one, it is included in the in-text extensive reading, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा extensive है, longer text है, तो आपने इसके ऊपर जो है वो उसकी application करनी है, ठीक है. So first of all you should read the table of contents, कि टॉपिक्स उसके अंदर क्या क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स कौन कौन सा कंटेंट मौजूद है, और चैप्टर ओवरव्यू, चैप्टर है तो उसका ओवरव्यू आपने देख लेना है. टू लर्न द मेन डिविजन्स ऑफ आइडियाज, कि मेनली इसके अंदर बात किस बारे में हुई है, टॉपिक क्या है. देन ग्लांस थ्रू द मेन हेडिंग्स आप उसके ऊपर जाएंगे इन ईच चैप्टर, जस्ट टू सी अ वर्ड और टू, कोई एक लफ्ज दो लफ्ज. रीड द हेडिंग्स ऑफ चार्ट्स एंड टेबल्स, हेडिंग्स जो चार्ट्स और टेबल्स की उनको रीड आउट करेंगे. Then comes read the entire introductory paragraph, जो उन्होंने स्टार्टिंग पे दिया हुआ है, उसको आप रीड आउट कर लेंगे. And then first and last sentence only of each paragraph. आप क्या करेंगे, फर्स्ट और जो लास्ट सेंटेंस है हर पैराग्राफ का, उसको आप जो है वो रीड आउट करेंगे, क्योंकि आप सारे का सारा मटेरियल रीड आउट नहीं कर सकते. यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, यू डोंट हैव you know what sufficient time to waste on reading the text, you know what, thoroughly before knowing that whether this particular text is worth reading or not for you. Okay,
Then comes for each paragraph, read only the first few words of each sentence. आपको थोड़ा सा पढ़ के आपको जो आइडिया हो जाता है, ठीक है. To locate the main idea, किसके अंदर main idea actually क्या है. Step number 4. Stop and quickly read the sentences containing keywords indicated in bold, face or italics. Italics में और जो bold हुए में उन keywords के ऊपर आप जो है वो stop करें, read करें quickly, लेकिन उनके ऊपर stop करें और देखें why it is prominent or what idea it is actually giving. Then come when you think you have found something significant, कुछ significant आपको नजर आए, कुछ important नजर आए, stop to read the entire sentence to make sure. पूरी का पूरा sentence मत पढ़ने बैठ जाए. Then go on the same way, इसी तरीके से चलते रहें. Resist the temptation to stop to read details you don't need. जिन details को जानने की और पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, उनको मत पढ़ें. Read chapter summaries when provided. If the summaries of the chapters are provided, तो आप उसको पढ़ सकते हैं. जैसे अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हम जो है वो summaries से काम चलाते हैं, ठीक है. हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, समरी को पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो दिस इज you know what, how to go through the text by applying skimming on it. All right. Okay. Then comes if you cannot complete all the steps above, अगर आप सारे steps नहीं complete कर सकते, compromise करें. Read only the chapter overviews and summaries. सिर्फ उसकी कुछ summaries और जो chapter का overview है उसको आप जो है वो बस रीड आउट कर लें. फॉर एग्जाम्पल, आर द समरीज एंड ऑल द बोल्ड फेस्ड कीवर्ड्स. जो बोल्ड हुए में हैं, इटैलिसाइज हुए में, उनको पढ़ लें. और उसके अलावा आप जो है वो जो सारे का सारा जो टेक्स्ट है उसको पढ़ने की बजाय समरीज के ऊपर फोकस कर लें. When you skim, you take a calculated risk that you may miss something. Of course, आप skimming कर रहे हो, तो आप जो है वो लॉट मोर चीजें, क्योंकि लॉन्गर टेक्स्ट है, बेसिकली तो जरूरी नहीं है कि लॉन्गर टेक्स्ट के ऊपर ही स्कीमिंग लगाई जाए, जरूरी नहीं है. आप शॉर्टर टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं. जैसे आपको एक रिसर्च आर्टिकल दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इसके ऊपर जो है वो इसको लगाएं स्कीमिंग को, तो आप क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा पढ़ा ऊपर से एंड से एक दो लाइंस, बस आपको आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है. तो आप डू नॉट कंफ्यूज इट that skimming cannot be applied on shorter texts. No, skimming can be applied on every sort of the text. Okay, any sort of the text you can apply it. Okay, for instance, the main ideas of paragraphs are not always found in the first or last sentences, although in many textbooks they are. बहुत सी textbooks हैं जिनके अंदर first और last sentence के अंदर ज़्यादा basic चीजें होती हैं, but this is not the case. This should not be the case in every situation. So ideas you miss, you may pick up in a chapter overview or summary. So ideas जो आपने miss कर दिए, वो आप overview और summary के अंदर आप उसको find out कर सकते हैं. Then comes good skimmers do not skim everything at the same rate or give equal attention to everything. Yes, skimming का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने सारे के सारे मटेरियल को बस गो थ्रू करके फारिग कर दिया. नो, आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर जो है वो जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स आ रहे हैं, कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं, कुछ डेट्स आ रही हैं, कुछ पिक्चर्स आ रही हैं, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ग्राफ्स आ रहे हैं, तो यू विल स्टॉप देयर एंड फोकस ऑन देम कि अच्छा ये है तो ये क्यों दिया हुआ है, ठीक है, एंड हाउ इट इज हेल्पफुल टू यू. तो आप उसको जरूर देखें, ठीक है जी. Then comes while skimming is always faster than your normal reading speed. Yes, skimming तो की इसीलिए जाती है, टाइम बचाना है ना. It is the most important reason or purpose behind is saving your time. और आपको जैसे अगर आपने आपके फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरह से क्या करते थे when we were students, like we were given 10 handouts, ठीक है, और टीचर ने कहा कि that I'll discuss it in the class. Now I just read 8 articles, for example, or 8 handouts. Now 2 are left, and I have only 5 to 10 minutes left.
So what I'll do, instead of skipping that or those handouts, I'll give a brief reading. I'll apply skimming on both of the handouts to get the general idea, so that if some question is going to be asked from that handout or from those handouts, I'm going to attempt them at least with my particular understanding. Whatever I understood, I'm just going to attempt the question. लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं, मेन हेडिंग्स का नहीं पता होगा, प्लीज बेटा टर्न ऑफ योर माइक, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. Okay, so when you while skimming, of course, is always faster. ठीक है, आप उसको जल्दी जल्दी से करते हैं. You should slow down in the following situations. तो कुछ situations हैं जहाँ पे आपको stop हो जाना चाहिए. अब वो क्या है? When you skim introductory and concluding paragraphs. जब आप introduction पढ़ रहे हैं और जब आप conclusion पढ़ रहे हैं, तो आपने तब जो है वो उसके अंदर skimming को बहुत ज्यादा faster नहीं लेकर जाना. You are going to go a bit slow. ठीक है? Then when you skim topic sentences हैं, main ideas उसमें दिए हुए हैं, कुछ bullets में form में दिया हुआ है, वहाँ पे आप थोड़ा सा slow हो जाएं ताकि आपको कोई particular information मिल जाए. When you find an unfamiliar word, कोई अजीब सा word that is a strange one, ठीक है, आपने पहले unfamiliar है, आप उसके ऊपर रुक जाएं, उसको देखें why it is written. Then comes when the material is very complicated. When material is so much complicated that you are not able to understand, you are not understanding whatever is written in the text. So what you are going to do is that you are going to slow down for a while and you are going to give the read. You are going to apply the strategy or technique of skimming in a bit slow manner. ठीक है, क्योंकि इस मटेरियल को ग्रास्प भी तो करना है ना, समझने के साथ साथ. So this was basically skimming. That is the part of your course outline. Now we will move towards surveying. Surveying क्या है जी? So in academic context, you will have much to read and you will need to use various reading skills to help you read more quickly. Yes, जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए. So surveying the text is another example of such a skill. Skimming and scanning are two others. तो ये भी एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी टेक्निक है, रीडिंग टेक्निक है, जो कि अप्लाई की जाती है मटेरियल के ऊपर रीडिंग के पर्पस के लिए. ठीक है? So what is surveying actually? So the literal meaning of survey is to take a broad look at something. Let me tell you one thing, girls, that surveying is just like the same as skimming. Skimming की तरह ही होती है ये. ठीक है? Is to take a broad look लेते हैं, आप broad look लेते हैं कि क्या है, such as a piece of land, जैसे एक जो जमीन का टुकड़ा होता है, to see what the main features are and how valuable it is. ठीक है, कितनी वो जो है वो how valuable it is and कौन से फीचर्स हैं उसके, तो किसी का आप सर्वे करते हैं जिस तरह. ठीक है? So surveying a text is similar in meaning to this. तो किसी टेक्स्ट के ऊपर भी सर्वे करना, किसी टेक्स्ट के ऊपर भी टेक्निक लगाना सर्वे की, बिल्कुल ऐसे ही है. It is a broad look at a text. टेक्स्ट के ऊपर आपकी एक broad look है. ठीक है? Focusing on the general aspects rather than details. आप डिटेल्स के ऊपर फोकस नहीं करते, बल्कि किस पे करते हैं? जनरल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल जो बातें लिखी होती है, उस पे करते हैं. बिल्कुल ऐसे जैसे आप स्किमिंग में कर रहे थे. With the main purpose being to decide on the value of the text. तो मेन पर्पस क्या होता है कि कितना वैल्यूएबल है टेक्स्ट. इसको देखने के लिए आप पहले उस टेक्स्ट का सर्वे करते हैं कि क्या ये आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इसको आपको मजीद जो है वो इन डिटेल या नहीं पढ़ना चाहिए, या कोई और टेक्स्ट की तरफ आपको मूव करना चाहिए. ओके, सो इट इज ऑलमोस्ट जस्ट लाइक स्कीमिंग. ओके, सो to determine whether it is worth reading more closely, क्या इसको इन डिटेल पढ़ने की जरूरत है या नहीं, या फिर I should switch to some other material or to some other site. Okay, if it is, then you can proceed to read in an appropriate way. अगर आपको लगता है कि ये worth reading है, पढ़ने के काबिल है, तो फिर आप उसको क्या करते हैं? appropriate way में उसकी reading करते हैं. Such as skimming for the main points of taking notes.
जैसे कि आप स्कीमिंग लगाते हो जिसमें आप मेन पॉइंट्स को जो है वो मद्देनजर रखते हो. इफ इट इज नॉट वैल्यूएबल, अगर वैल्यूएबल ना हो, देन डिस्कार्ड इट, छोड़ दें उसको. देर आर टू मेनी टेक्स्ट अवेलेबल एंड यू विल नॉट हैव टाइम टू रीड देम ऑल. बहुत से टेक्स्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है. बहुत से जो हैं आपके नॉवेल्स है, या अगर हेल्पिंग बुक्स की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग बुक्स अवेलेबल हैं आपकी एक पर्टिकुलर जो है वो टेक्स्ट के ऊपर. तो आप देखते हैं उसमें कि आपको आपको कौन सी बेहतर लग रही है उनमें से, ठीक है. आपको कौन सी पढ़नी चाहिए. तो जो आपको सर्वे करके या स्किमिंग लगा के आपको जो बेहतर लग रही होती है, आप उसको परचेज कर लेते हैं. सो दिस वाज सर्वेइंग. अच्छा जी, अब देखिए व्हाट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट शुड आई लुक एट. कौन से पार्ट्स को मुझे देखना चाहिए. सो एज सर्वेइंग लुक्स एट द जनरल एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट. जनरल एस्पेक्ट को देखना है, बिल्कुल स्किमिंग की तरह है, अगेन एंड अगेन बता रही हूँ. एंड यू विल नीड टू पे अटेंशन टू सम ऑफ द सेम मेन फीचर्स ऑफ अ टेक्स्ट. मेन फीचर्स के ऊपर, टाइटल के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर, जो उससे आपको कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लग रही है उसके ऊपर आप उसको सिर्फ करेंगे, ठीक है. In addition, however, you will also need to consider other aspects such as who the author is. क्या राइटर एक्सपर्ट है या नहीं. हम बुक लेने से पहले राइटर को भी तो देखते हैं ना, ऑथर देखते हैं जिसने बुक लिखी है. अगर तो ये इम्पोर्टेंट है, एक्सपर्ट है, तो फिर हम उसकी बुक लेते हैं, वरना हम उनकी बुक्स नहीं लेते. एंड वन इट वाज रिटन. रिटन जो है वो कब हुआ था, लिखा कब गया था, रिसेंट है या बहुत पुराना है. और आपको कौन सा चाहिए, रिसेंट चाहिए या कोई बहुत ओल्ड चाहिए. तो फिर आप उस हिसाब से उस टेक्स्ट को देखेंगे कि ये इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना. अच्छा जी, in order to decide if it is a credible source, क्या आपको चाहिए. These are examples of critical reading skills which are used in evaluating a text. आप text को evaluate कर रहे होते हैं actually. Other aspects such as information in graphs, such as charts, diagrams, may be useful. वो भी यूजफुल हो जाती हैं, आप उनके ऊपर भी एक लुक दे सकते हैं. इन शॉर्ट, व्हेन सर्वेइंग द टेक्स्ट, जब आप किसी टेक्स्ट को सर्वे कर रहे होते हैं, द फॉलोइंग विल बी इंपॉर्टेंट. वो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जैसा कि नोट दैट नॉट ऑल टेक्स्ट कंटेन ऑल ऑफ दीज. हर टेक्स्ट के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती. मैनी टेक्स्ट डू नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट और सेक्शन हेडिंग्स. बहुत से टेक्स्ट में सेक्शन नहीं बने होते और एब्स्ट्रैक्ट्स भी नहीं होते, जैसा कि आपके रिसर्च पेपर में बने हुए होते हैं. आपको पता है ना, आपके रिसर्च पेपर का जो है वो, या रिसर्च थीसिस का पहले एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, और आप इस पूरे के पूरे रिसर्च आर्टिकल को या रिसर्च थीसिस को पढ़ने से पहले आप उसको, उसका जो होता है एब्स्ट्रैक्ट होता है, आप उसको रीड आउट करते हैं, जिसके अंदर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन, दैट हाउ this research was done, what were the sampling techniques, what was the population, which you know what from which people the data was gathered, which technique was applied to do the research to perform it, and all of the details are present over there. Okay, so details about the author, date of publication, title and subtitle, abstract, introduction, conclusion, section headings, graphs, charts, diagrams. So in सारी चीजों के ऊपर you just stop for a while and give a brief look to them. अच्छा जी, note that when surveying the text, unlike skimming, it is not usually necessary to read the first and last lines of each paragraph. Yes, you are not supposed to read each and every first and last line of every paragraph. Especially for longer text. If the text is longer, the way I have given to you, आपने इसके ऊपर सर्वेइंग भी अप्लाई करना है, आपने इसके ऊपर स्किमिंग भी अप्लाई करना है, ठीक है जी. This would take too much time and does not match the purpose. तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. You only need a very general understanding of the main ideas in order to assess relevance. अगर आपने इसको देखना है whether it is relevant to the material that is that you are in search for, तो आप उसको in detail जो है वो फिर देखेंगे, otherwise do not need to do it. अच्छा जी, the other technique is sectioning, ठीक है. Sectioning भी एक reading technique है. So sectioning refers to the strategy in which we divide each chapter into smaller sections. ये कल भी बताया था मैंने आपको. Smaller sections में हम हर चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं एंड सेट रीडिंग गोल्स, और हम अपनी रीडिंग के कुछ गोल सेट करते हैं.
टू रीच इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, कि इतने वक्त में मैंने इतना पढ़ना है, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को, ठीक है। और फिर हम लोग, जैसे मैं कहती हूँ कि अभी मैं एक चैप्टर पढ़ूंगी, उसके बाद मैं अपने कुछ घर में काम देखूंगी, उसके बाद मैं रात को फिर एक चैप्टर पढ़ूंगी, और इस तरीके से मैं इतने दिनों में इसको फिनिश करूंगी। सो दिस इज सेक्शनिंग, कि आप उसके सेक्शन बना लेते हैं। आप पेजेस डिवाइड कर सकते हैं कि 4 पेजेस में आज पढ़ूंगी एक सिटिंग में, फिर उसके बाद शाम को मैं 4 पढ़ूंगी, फिर मैं सुबह 4 पढ़ूंगी। तो ये सारी क्या है, सेक्शनिंग है, कि आप उसको सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है जी, आई थिंक यू हैव गॉट इट, एंड स्टिल इफ इज देयर एनी कंफ्यूजन, यू गाइस कैन आस्क मी।